Martin Scorsese, one of the most influential directors in the world. Wes Anderson, one of the most stylistic directors in the world. I assume तुम्हें पता ही होगा कि दोनों काफी ज़्यादा influenced थे by the cinema of Satyajit Ray. Ray is one of my masters. He's one of the filmmakers whose work I've returned to. I keep his films with me all the time, and when I want to be focused again, I go back to them. But yeah, I wanted to go to India and learn, but I hadn't been. And I had become fascinated with India, really from movies, particularly the movies of Satyajit Ray, the filmmaker Satyajit Ray. और इनके thoughts Indian audiences के बारे में कुछ ये थे. We have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience, exposed to the commercial Hindi cinema more than anything else. Relax, को बात तो सही कही इन्होंने. But I think we as a society are evolving now. तुम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, इस ग्रोथ का लाइव एग्जाम्पल हो. अब डायरेक्टर्स का पुल एक्टर्स से ज्यादा हो रहा है. SS Rajamouli is the finest example for this matter. From Telugu reach to international reach. And speaking of international reach, Christopher Nolan is the hottest director in the world. Nolan की Oppenheimer कहने को 3 घंटे की R-rated ड्रामा जिसमें बस बातें हो रही हैं वाली मूवी है. And it has become one of the highest grossing movies of 2023 with $800+ million का कलेक्शन. But क्या केवल नंबर्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि नॉलन से बड़ा कोई डायरेक्टर ही नहीं है? Well, obviously it can't be true. अगर केवल नंबर्स के बेस पर ही देखा जाता तो सिद्धार्थ आनंद बॉलीवुड का बेस्ट डायरेक्टर होता. बट ऐसा नहीं है मेरी जान. नहीं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा. ये बंदा छाट तक नहीं है नॉलन की. बट हाँ, नंबर्स सुला रहा है. एंड नंबर्स डायरेक्टर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं. मार्टिन स्कॉर्सेसी द एमसीयू हिटर, एक लेजेंड, बट उन्हें भी प्रोड्यूसर्स के नोट्स झेलने पड़ रहे थे फॉर द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट. द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट को लेकर स्कॉर्सेसी की लड़ाई तक हुई थी क्योंकि दैट फिल्म वाज टू एडल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स. एंड यही एक प्रोमिनेंट रीजन है कि आज स्कॉर्सेसी स्ट्रीमिंग की साइड है. द आयरिश में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्टेड ही नहीं था 3 घंटे के ब्रूटल गैंगस्टर ड्रामा में. एंड सेम ऐसा ही अब हो रहा है. किलर्स ऑफ द फ्लावर मून एप्पल टीवी पर रिलीज होगी. एंड द सेम प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय डेविड फिंचर आल्सो, इसलिए द किलर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. Speaking of numbers, Christopher Nolan and James Cameron are the gigantic directors in the world. कैमरन की तो सबको पता ही है, पुड्डे की 3 मूवी हाईएस्ट ग्रॉसर्स की लिस्ट में है. एंड रही बात नॉलन की, देन ओपनहाइमर बीइंग 3 घंटे की R-rated मूवी जिस पर लोग केवल बातें कर रहे हैं, इस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. और अगर इंडिया की बात करें जो जल्द इंटरनेशनल लेवल के नंबर्स पर खेल रहे होंगे, यप यू गेस्ड इट राइट, SS Rajamouli. बट शब्दों का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. I didn't say greatest, I said gigantic. वो भी in terms of पैसा, क्योंकि शुरुआत से समझते हैं. There is actually a box जिसे फिल करके ही पता चलेगा that who is the greatest director in the world, and the box is leadership. Making is a director's medium, and it is all about their vision, and you service that vision. I know that. Cameron, Nolan, Rajamouli, Wes Anderson, David Lynch, Fincher, etc. ये वो डायरेक्टर्स है जिन्हें कमांडर्स कंसिडर किया जाता है. एंड कमांडर्स आर टिपिकली स्ट्रिक्ट. जैसे फिंचर एक्टर्स की होता है if he doesn't get the perfect scene. Nolan doesn't allow phone and internet. He doesn't even allow a fucking chair. बट यहाँ एक कैच है, एसेट बॉक्स फिल करना पड़ेगा. I didn't say it must be ticked, क्योंकि this box is just a stereotype. This box is true, but only to an extent. Like Richard Linklater, director of Before Trilogy and Boyhood, he let actors to do the job. इनकी सारी मूवीज इम्प्रोवाइज्ड होती हैं for the most part at least. Julie came in once and she said, "This movie, it's just us talking. People are going to be bored of me." And Rick said, "If they get bored of you in 2 hours, I'm not making this movie for them." There's a scene in Before Sunrise where I'm supposed to talk her into getting off the train. And Julie kept saying, "I would never get off the train with some guy like this." And Rick would say, "Well, what would it take?" And I would say, "Oh, I know what it would do." And I'd try some Don Juan-like move. And Julie would be like, "No way." Then I would say, all right, let me try again. And I'd try this, and Julie was like, "Oh, you make me sick, you American populist," you know. And then Rick would be like, "Okay, what would it be?" And she'd say, "Well, it would have to be something that showed me that he was smart." And this thing makes Linklater an auteur director. Auteurship, yani something which makes a director distinct, which makes a director special. Just like Wes Anderson, because of his recurring visual style and themes of wanderers. बिखरे रिश्ते, पटकते हुए बच्चे. इंडिया की केस में I would say इम्तियाज अली, because of his recurring themes of love and grief. And even Damien Chazelle, जिसकी हर फिल्म obsession and sacrifice के बारे में होती है. And music plays a vital role in his films. All भी auteur directors हैं. And in fact, every great director is an auteur. But एक चीज़ और important होती है, टाइम के साथ इवॉल्व होना.
but keeping your signature styles with you. And काफी लोग फेल हो गए because they didn't evolve. जैसे इंडिया के ही RGV, प्रियदर्शन, अनिल शर्मा, डेविड धवन. Hollywood में I would say Guy Ritchie, Michael Bay, and even Russo brothers right now. Russos are not evolving at all. I think genre switch करना, अपनी आर्ट को ट्रांसेंड करना in that genre, keeping your signature styles also. I feel it elevates you as a director. And जैसा कि Godfather के डायरेक्टर ने कहा था, Look at my films. The first thing you'll notice, every film I made was totally a different style of the previous one. I like to make movies I don't know how to make. If you listen very carefully, the movie starts telling you how to make it. And that's a thrill. The movie says, do more of that. But it says it in a very quiet voice. So if you're sure you know how to do it, you won't even hear it. Look at Nolan. He was constantly making mind-bending thrillers after the Dark Knight trilogy. But with Oppenheimer, he just switched himself to a historical drama genre. But Oppenheimer was not your typical historical drama. It was a Nolan movie entirely as an auteur. सिग्नेचर स्टाइल्स वही थी, वरना काफी डायरेक्टर्स जॉनरा स्विच करके फकअप कर देते हैं, जस्ट लाइक गाय रिची. इफ यू लुक एट SS Rajamouli, he is also switching genres by keeping the Rajamouli style in every film, and he is just refining himself with every film. क्योंकि महाभारत भी तो बनानी है, और क्यों नहीं? Rajamouli is on his way to become a perfectionist, and I love directors who are bold. For example, Damien Chazelle. Good enough is never enough for Damien, and that's what I love. That's what I find inspiring with the director. A director who's like, no, we haven't got it yet, go again. No, I need that. It was almost perfect. The whole 2.5 minutes of it was perfect except those 2 seconds, so we're going to do it all over again. You know, like I love that. I love that someone's not going to settle for anything less than the absolute, better than they imagine. And actually ऐसे काफी डायरेक्टर्स हैं, and I love them. But इतना ज्ञान चोदने के बाद आखिर ग्रेटेस्ट डायरेक्टर है कौन? कुछ लोग कहेंगे कल्चरल इम्पैक्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट थिंग इन डिटरमिनिंग द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एवर. वेल, इट इज ट्रू, बट इसकी भी कई लेयर्स हैं. फ्रांसिस फोर्ड कपोला चेंज्ड द एंटायर हॉलीवुड थ्रू गॉडफादर इन मेनी वेज. लाइक इससे पहले मूवीज की लाइटिंग काफी कलरफुल और काफी ब्राइट होती थी, एंड इसलिए गॉडफादर को इनिशियली क्रिटिसिज्म मिला कि गॉडफादर की लाइटिंग काफी डार्क थी, इतनी डार्क थी कि आंखें तक नहीं दिख रही थी कैरेक्टर्स की. ऐसा मैंने नहीं, क्रिटिक्स ने बोला था. इसके अलावा भी काफी क्रिटिसिज्म मिला था. If you had told me when I was doing The Godfather, this movie not only was going to be remembered, but was going to be considered good, I thought you nuts, because everyone hated it. Everyone hated what I was doing. So you never know what's going to happen. बट देखो क्या हुआ, गॉडफादर चेंज द एंटायर हॉलीवुड का स्ट्रक्चर. तो क्या कपोला है ग्रेटेस्ट? अगर ऐसा है, देन स्कॉर्सेसी का क्या? स्पिलबर्ग का क्या? स्टीव मकीन, डायरेक्टर ऑफ 12 Years a Slave एंड शेम, उसका क्या? इनका भी तो कल्चरल इम्पैक्ट रहा है. द पॉइंट इज, कल्चरल इम्पैक्ट तो हर एक ग्रेट डायरेक्टर ने डाला है इन वन वे और द अदर, इसलिए तो उन्हें ग्रेट बोला जाता है. बट आखिर ग्रेटेस्ट कौन है? वेल, द ट्रूथ इज नो वन. दे आर ग्रेट डायरेक्टर्स, बट देयर इज नो वन जिसे हम ग्रेटेस्ट कह सकें, बिकॉज दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. सबके अपने ओपिनियंस है. ऑब्जेक्टिवली भी कहें तो एक लिस्ट बन सकती है ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स की, बट किसी एक को ग्रेटेस्ट बोल देना, आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट इनजस्टिस, क्योंकि इस चीज की कई लेयर्स हैं भाई. तो द कंक्लूजन इज, द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर द वर्ल्ड इज अ फकिंग लाई, क्योंकि हर डायरेक्टर का एक अपना विजन होता है. खैर, तुम मेरा विजन भी समझो यार. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. और हाँ, मेरे एडिटर को सल्यूट, जो वीडियो तुम देख रहे हो उसी ने एड की है, तो मेरे भाई इसका चैनल डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेकआउट कर देना.